Okay, first we will discuss today afterload and ejection fraction. Okay, before we go into the details of afterload and ejection fraction, first I will recap the previous discussion that was related to venous return and preload. Okay, venous return is the return of blood in atria uh, all the way into the ventricles from superior vena cava and inferior vena cava. And this venous return is dependent on different factors like venoconstriction. If there is a greater venoconstriction, there will be the great increase in the venous return. This next is the skeletal muscle pump. Greater will be the skeletal muscle pumping ability or contraction of the skeletal muscle. Greater will be the venous return. If there is greater amount of blood volume in your circulatory system, then ultimately the venous return will be increased. Okay, and if there is greater effect of gravity on your blood which is present in the veins, so lesser will be the venous return and vice versa. Next is the preload. It is also called as end-diastolic pressure. End-diastolic pressure. With the pressure that is exerted by the blood on the walls of the right ventricle is preload at the end of the diastole. And it is dependent on the end-diastolic volume and uh, venous return. Greater will be the venous return, higher will be the end-diastolic volume, and ultimately a greater will be the preload. Okay. Next is afterload. Next is afterload. There are different definitions related to the afterload, right? Okay. Afterload. Afterload is a pressure, or you can say it is pressure that the heart must overcome to eject blood to eject blood during systole. During systole is the first definition. It's the pressure that uh, the heart. It is the pressure that the heart must overcome to eject blood during systole. Okay, it's the first definition. Second definition. It is the pressure. It is the pressure that heart is the pressure that heart must work against to eject blood during systole, right? Or you can say that ventricular contraction, right? Okay. Next definition. It is the pressure. There are different, you can say, scenarios related to afterload. It is the pressure against against which the heart has to perform the pressure against which the heart it is the pressure against which the heart has to perform to eject blood. There is another definition. Fourth one. There are different scenarios. Okay. It is the pressure exerted by blood on aortic valve. So these are different
definitions of afterload. Okay, अब मैं आपको समझाता हूँ एक मिनट. For example, let's suppose this is your heart. These are the ventricles. Right ventricle, left ventricle. Definitely from this left ventricle. वो पता है, फिर आगे उसके बाद aorta आ जाता है. क्या आ जाता है? Aorta. This is aorta. आपको पता है ये ventricle है, ये left ventricle. This is left ventricle. This is left ventricle. ठीक है. अब आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आता है, फिर यहाँ से here are the aortic valves. यहाँ पे aortic valve होते हैं, ये यहाँ पे. This is the aortic valve. ठीक है. फिर इनको क्रॉस करके ब्लड किधर चला जाता है? aorta में, right? Now definitely aorta is a bigger vessel, and definitely if blood is here in the aorta, uh, it has certain pressure. On the aortic valve. ठीक है. और आपको पता है जो valve होते हैं, डिफरेंट valves जो हैं, mitral valves, aortic valve, pulmonary valves, ठीक है, tricuspid, bicuspid. ये फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, तो ये ओपन किस में होते हैं? aorta के अंदर ओपन होते हैं. अगर ये वेंट्रिकल के अंदर ओपन हो तो देन देयर विल बी द रिगर्जिटेशन. क्या होगा? बैक फ्लो हो जाएगा ब्लड का aorta से वेंट्रिकल की, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. तो अब यहाँ पे इस aorta के अंदर जब ब्लड चला जाता है, सारी बात है, वो ब्लड वापस तो नहीं आ सकता. तो दैट blood is going to create a pressure here, that is called as afterload. अब यार सी बात है. नो लिसन, अब जो वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर होता है और फिर एक आफ्टरलोड है या एक aorta के अंदर प्रेशर है, तो अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर दिल ने लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को निकालना है aorta के अंदर, तो वेंट्रिकल्स के अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए या aorta के अंदर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए? दैट इज अल्टीमेटली आफ्टरलोड. यू पीपल हैव टू टेल मी, should the pressure be in ventricles greater to eject blood in the aorta, or in aorta the pressure should be higher to eject blood from left ventricle into aorta? सोच के बताना है आप लोगों ने. यस एग्जैक्टली, गुड. डेफिनेटली लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए. तो डेफिनेटली अब आप लोग इस इन डेफिनेशन को देखो. इट इज द प्रेशर दैट हार्ट मस्ट ओवरकम टू इजेक्ट ब्लड ड्यूरिंग सिस्टोल. तो ये वो प्रेशर है जिसको ओवरकम करना होता है हार्ट ने टू इजेक्ट ब्लड ड्यूरिंग सिस्टोल, दैट इज आफ्टरलोड. और वो प्रेशर होता किधर है? aorta के अंदर. It is the pressure that heart must work against to eject blood during systole. Definitely ये वो प्रेशर जिसके अगेंस्ट हार्ट ने क्या करना होता है? वर्क करना होता है, टू परफॉर्म टू इजेक्ट ब्लड. ओके. इट इज द प्रेशर अगेंस्ट विच द हार्ट हैज टू परफॉर्म टू इजेक्ट ब्लड. डेफिनेटली द प्रेशर अगेंस्ट हार्ट ने इसके अगेंस्ट परफॉर्म करके फोर्स के साथ तो इसको ओवरकम करना होता है, इससे बढ़ना होता है, तभी वो ब्लड को इजेक्ट कर देते हैं. तो उस प्रेशर को हम आफ्टरलोड कहते हैं. इट इज द प्रेशर. ये देखो, ये जो लास्ट वाली डेफिनेशन है ना, ये थोड़ी सी आसान डेफिनेशन, दिस बिट easier definition to remember. It is the pressure exerted by the blood on the aortic valve. Definitely aorta के अंदर ब्लड जाएगा, फिर वहां पे थोड़ा सा वो पीछे की तरफ फ्लो करे. क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस हो रही है, हमने पढ़ा है पेरिफेरल रेजिस्टेंस. तो बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा, दैट इज नोन एज आफ्टरलोड. एंड this afterload is definitely dependent on total peripheral resistance. Greater will be the total peripheral resistance, greater will be the afterload. Now I am going to ask you people the question: if afterload is higher, what will be the effect on stroke volume? Either it is going to be increased or decreased. Stroke volume. If afterload is greater, or if afterload is higher, what will be the effect on the stroke volume? सब बताओ. Everyone has to give answer in the chat section. Exactly, your stroke volume will be decreased, and ultimately your cardiac output will be decreased. Right. So this afterload is inversely proportional to stroke volume and cardiac output. Right. So next is the ejection fraction. It is measured as percentage of total amount of blood in heart that is pumped out with each heartbeat. Right. ये परसेंटेज होती है. ये क्या होती है? परसेंटेज. It is measured as percentage of total amount of blood in the heart that is pumped out with each heartbeat. So
Next, here is the formula for ejection fraction. It is used as clinically to check the ventricular performance, in different diseases. For example, congestive heart failure एक disease है जिसके अंदर हम ejection fraction चेक करते हैं. ठीक है, ओके. फॉर्मूला ejection fraction का जो फार्मूला है ना, that is stroke volume over and diastolic volume multiplied by 100. ओके, ये है स्ट्रोक वॉल्यूम का, सॉरी, दिस इज द फार्मूला फॉर ejection fraction. एंड नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है ejection fraction की? नॉर्मल वैल्यू ये होती है, इट इज फ्रॉम 50% to 65% ejection fraction, राइट. आप खुद भी करके देख सकते हो. स्ट्रोक वॉल्यूम और एंडास्टोलिक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज यूज्ड टू check the ventricular performance performance in congestive heart failure is a disease, right? So this is all about the today's discussion, afterload and ejection fraction. Ejection fraction is very important. ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, बिकॉज दिस फ्रैक्शन इज यूज टू चेक द वेंट्रिकुलर परफॉर्मेंस. और समटाइम क्या होता है कि हार्ट फेलियर के केस में ये इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल रहती है. वो एक सिचुएशन होती है हार्ट फेलियर में. हार्ट फेलियर होता भी है लेकिन ये इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल रहती है, तो इसलिए इसको इवेलुएट करना ज़रा बिट ट्रिकी. ठीक है, सो द लेक्चर इज ओवर.